All right, so let's get started. So first we see what is object-oriented programming and how we can do object-oriented programming in Python. Okay, Yes. so we create a class to store something. We'll create a class to store students' information. Okay, so I'll say student dot py. So this is my file name I created. So what is object-oriented programming? That right now what we do is we are either giving we will write one line. Let's suppose this yellow line representing a instruction. So I can give this one line instruction to my processor, and the processor can execute it. Okay. Yes. Uh, so likewise, we write And multiple lines, and we tell processor to do it step by step, sequence by sequence. So one after other. So first, what processor will do? It will pick line number one, and then line number two, and then line number three. So all these instructions are like separate entities. They are just given in sequence one after other. Okay. So what else we can do with Python is we can keep this set of instruction in a box kind of structure. Okay, we say that we are now creating a function. So what exactly function is? Function is nothing but collection of instructions. So now this instructions are not like separate entities. If I do this 1, 2, 3, no, then I will do some meaningful task. Okay, so I'll achieve something. I'll complete some task. So after doing instruction number one, the task is still incomplete. After doing two, I'm halfway. And once I complete instruction number three, then my entire task is done. All right. okay. So this red box is representing a function over here. So this yellow lines are instructions, and this red box is function. Yes, sir. Okay. So now we can create various such functions, and these functions can communicate with each other. They can share their data among themselves, and they can also talk with user. So they can show their result to the user also, as well as they can talk with other functions. So if there is a complex task, so instead of one function, we'll create multiple functions, and these functions are working together in a team. And after proper coordination and exchange of data, they'll be able to do a meaningful task for us. Okay, so they'll do a complete job for us. Now, what next we are doing is right now we are, this different functions are like separate entities, no? So like function one is there, function two is there. Likewise, we can create multiple functions. Okay, so function one will do some other task, function two is doing something else, and function three is doing something else. Like for example, function will do addition task, function two will do subtraction. Okay, well, And just we can name them as a general function. So they are not like anything specific. I can create functions for doing, I think everything which it supports. Okay, so likewise we can create multiple functions. So right now, as we started earlier, that we said that we are giving this instructions. So in the beginning, I said that this yellow line instructions we are giving as a separate entities. No, they are not connected with each other unless I put them inside functions. Now, similar thing is happening with functions also. I have these three functions, but they are like discrete entities. I mean, they are not connected with each other. They are not part of each other. They are separately function one, function two, function three. Total three different entities are standing over here. Now, with the help of classes, what we can do is we can put these functions together and keep them in a bigger box. Okay, so likewise, this big box represents three functions, but these three functions are part of, I mean, they are somehow connected with each other. They belong to each other, and I mean, this will make a complete set of software for us.
For example, if you want to imagine we can write a program for adding two numbers. Okay, so we can write a program for adding two numbers. So what this program will do, it will do simple addition plus function. Okay, then I can use this addition program to create a function for depositing money in bank account. Correct. So I can use this plus function to create a deposit function. So I'll give some amount, and whatever amount I'm giving and the total balance, whatever is there, both the things will be added, and then I'll get the final value. So addition function, I can use it to make a deposit function. Okay, so this addition operation I can apply to create a deposit function. Correct. Now, likewise, I can create a subtraction operation. So using subtraction operation, we can do something like withdrawal operation. So we can create withdrawal operation with the help of subtraction operation. Yeah. Okay. Now, withdrawal. Okay. Now this addition and subtraction or deposit and withdraw, these two are now separate functions. I mean, they are not connected with each other. Like deposit is a separate thing and withdraw is separate thing. But if I put them together, in a one entity, okay, in a one entity, what we call them classes. Like classes are kind of collection of functions, and we can also have variables also. It's not only functions, we can also put variables in them. Like what type of variable this deposit and withdrawal function will use? They will use the bank amount, total balance value, the amount to withdraw or deposit. So this is how we make a meaningful object in front of us. So like I can create a bank account virtually. Okay, and what that bank account can do, that bank account can store my information in those variables. Okay, like it can store my name, it can store my bank account number, it can store my total balance amount. And then that object will also have functionality associated with it, that with this bank account, what I can do is I can deposit, I can withdraw. Okay, we can also add multiple functionality which will be only related with bank account. Okay, and then we can so this will be more meaningful in a software way, no, that instead of giving everything in a discrete way, scattered way, where we are putting them together and making a complete object, and then we are giving this object to use to the user. Okay, so that's why this object oriented programming is so important for us. Okay, so as a programmer, when we do object-oriented programming, what basically we are doing, we are creating a collection of functions and variable together, which will represent a real world kind of object. Like if we compare any real world object, so what real world object look like? If suppose you want to, any real world object, like we can imagine like a car is there, or washing machine is there, AC is there, okay, or your books are there. So all existing entities are having these two common features in them. That first thing is they are having some characteristics. Like if we talk about car, then car will have the color of car, then number of wheels. All this data is there with it. And next, this car is having some kind of functionality. So we can drive the car, we can apply brakes and all. And these functions are like limited in the scope of car object. Okay, so we cannot drive a washing machine. Yeah. So washing machine is used for some other purposes. So this is how virtual space may we are classifying this object and dividing this object with each other by putting them inside classes. Okay. So I can create a class for washing machine, and that washing machine class can be used to first to store the value of the variables, like kitna uska storage capacity hai, what type of the thing is there, and then what functions we can put them into, like it can rotate the drum or something like that. And similarly, we can create virtual objects, like bank account is not a real or physical object. It's like a virtual object
but we can compare that this both real world object and this virtual object are exactly same. Okay, in terms of like if you compare them each other, only difference between real and virtual is we cannot touch and feel the virtual object, but functionality wise and feature wise, this virtual object which is existing in the digital world and the real world physical objects, they resembles with each other. So that's why we say that this kind of programming is called object oriented programming. Okay, and in order to do this object oriented programming, we create classes. Okay, and these Yeah. classes are kind of template only. Yeah, so with the help of these classes, what we can do, we can derive multiple objects. So I can create I cannot only create one account or one bank account out of this class. I can create multiple bank accounts from this class. For each user we can have separate or different accounts. Okay. So this thing is called class. That green box is called class. And then how we'll use this class? From this class, what we can do is we can derive objects. Yes. Okay. Yeah. And we will use this objects in real world. I mean, in the virtual world. So when we do programming, we will use this objects. Okay. And this classes will only act as a template, which will tell that whatever object we are deriving, this object is having so features and so many functionality. Okay, Yes, sir. so classes are just like template. It will tell whatever object we are deriving from this template will have so this many features and this many functionality with it. Okay, so now now we create one program or one class in Python and see how it will look like. Okay. So we'll create to create a class in Python, we'll use this keyword called class. The class, whenever we write class, Python compiler or interpreter will know that now we wanted to do object oriented programming and we are now creating a class. Okay, so we can give this Okay. name as we are creating class called student. Okay, and then colon. So right now we are in this green box. Okay, so right now we are in a green box and we can create functions and variables over here. Okay, so we'll have this variable called name. Okay, so either if you want to create your object over here, variables over here, you create it. Otherwise हम लोग बाद में भी इसको create कर सकते हैं. So ऐसा कुछ hard and fast नहीं है कि हमें पहले ही सारे variables को create कर देना. We can later also we can add more features and functionality to this class. So अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे नेम. नेम के अंदर हम कुछ रैंडम वैल्यू डाल देते हैं. हम लोग बोलेंगे नेम की वैल्यू क्या है, फिलहाल के लिए टेस्ट है, तो टेस्ट इज द नेम, और वी विल से नो नेम. So right now we are not giving any name to this variable name. Okay. Now when we create object, what happens is whenever we create object, it's like creating a variable. ओके, सो जैसे हम लोग डेटा टाइप को कोई नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वैसे एक नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा. बट द प्रॉब्लम विद दिस ऑब्जेक्ट इज हाउ मच स्पेस दिस ऑब्जेक्ट विल ऑक्यूपाई इन मेमोरी, वी डोंट नो. ओके, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कितना तुम्हारे पास वेरिएबल है क्लास में और कितने फंक्शंस हैं. ओके, सो वी कैन हैव इट्स आवर चॉइस, हमें कितना वेरिएबल चाहिए. सो दिस ऑब्जेक्ट साइज इज नॉट फिक्स्ड, इट विल चेंज. ओके, so when we are creating object from the class, we need to have some method which can help us to calculate कि कितना space required है अपने को. Okay, so for that purpose we use constructors. What constructor can do, they will construct the object for us, and what exactly they are how they are helping us to construct the object, they are calculating the amount of space required in the memory. Okay, you got that point? Yeah. It will show how much the space is. Yeah. Space the object will take. So for that we have init function. So this init is used for it's constructor for us. It will help us to calculate the storage space for us. Okay. So
Last time which class you created? Init, Init only, no? So you understood why we used init over here? Why you used init over there? so that I could know the Mm-hmm. कितने space लिया है, जो लिया है object. So अभी क्या काम कर रहा है तुम्हारा init function वो समझ में आ रहा है ना? Okay, so init Yeah. function है. So when we create init, हमें क्या करना पड़ेगा? Def keyword use करना पड़ेगा यहाँ पे. So def is keyword. It will tell you that now next we will have a function. Now init is keyword. Object oriented ही है ना? हाँ. This thing. Object oriented के अंदर class आता है या class के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक स्टाइल हो गया प्रोग्रामिंग का. ठीक है. तो वो क्लास में एक हाँ, नेम. अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट बना के प्रोग्राम करना पड़ेगा. I didn't understand object का part. ऑब्जेक्ट का Class या object same है? आई मीन वी Class कैन and object सेम same नहीं है? है. क्लास इज लाइक एक गाइडलाइन रहेगा दैट जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो गाइडलाइन को फॉलो करके बनेगा. तो अगर मुझे बैंक अकाउंट के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है तो हर बार मुझे बैंक अकाउंट के लिए फीचर या वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है. मेरे पास एक रेडीमेड टेम्पलेट अवेलेबल है. आई विल यूज दैट टेम्पलेट टू क्रिएट बैंक अकाउंट. वैसे अगर मुझे किसी स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मेमोरी में तो हम क्या करेंगे, वो स्टूडेंट का टेम्पलेट यूज करके स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना देंगे. Okay, so classes are just like templates which we will use to create that type of object. So sir, green is the class and what is the object then? The green box is the class. So what is the object? Object is the actual entity which we are going to use in the program. Class को हम लोग directly use नहीं करेंगे. Class का सिर्फ एक ही काम क्या होगा, वो object बना के देगा हमको. और जब object बन जाएगा तब हम ये objects को use करेंगे programming में. जैसे हम लोग variables Okay, so each box is an object. each Box is an object. this green one. Green one is class. We can have some other color box. I'll write the program. No, first we create class and then I'll tell you where the object is and how we are going to use that object. Okay. Okay. So right now you understood init function. What init function will do? It will help us to create objects. Okay. Yeah. So we can have multiple object derived from a class. No, it's not like that we will have only one object deriving from this one class. So we can derive multiple objects out of one class. Okay, all objects will have look like same either, so they will have all same functionalities. Okay, so in order to specify differentiate that with which object we are actually working, we will have this self keyword. Okay, so self will tell that function or variable I'm accessing is like belonging to the object which is calling. Okay, so जैसे कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे पास ये जो फंक्शन, ये जो क्लास है, उससे हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं. एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट 1 रहेगा, एक ऑब्जेक्ट 2 रहेगा. Okay, so first is object, second is object 2. So what self will tell, so if I'm using object 1 or then object 1 का ही feature and use होना चाहिए. So this object 1 and object 2 will have different features, like student 1 है, student 2 है. Student 1 का different name होगा, student 2 का different name होगा. What self will tell that तुम जिस भी object को भी use कर रहे हो ना, उसके variables को access करना है. तो सेल्फ इज लाइक कि जो ऑब्जेक्ट है उसके वेरिएबल, उसके नेम को एक्सेस करो, नॉट अदर ऑब्जेक्ट्स नेम. सो सेल्फ इज लाइक यूज द ओन फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी of that specific object. Okay, so self is required. So every time when you do object oriented programming with Python, you have to pass this parameter self. Okay, and then this will also take value of name. Okay, from where this name is coming, when I create the object, no,
at that time I will decide what name to give to this student. ठीक है? And if I say self dot name, so self dot name मतलब अभी जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं उसका जो नेम वेरिएबल है, ठीक है, उसमें कौन सी वैल्यू डाल दो जो यूजर ने दिया है. Okay, so user can give any name over here, will pass in the objects variable. So यहाँ पे दोनों का नेम सेम हो रहा है, यहाँ पे हम कुछ और भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं x भी ले सकता हूँ. ठीक है? हाँ, बट ये वैल्यू कहाँ से आएगा, ये हम बाद में यूजर से पूछेंगे कि क्या कौन सा वैल्यू है नेम का. तो यूजर जो नाम बताएगा वो नाम का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे. बट हम क्या कर सकते हैं, सेम नेम भी दे सकते हैं ना, बिकॉज हम लोग नेम ही पूछ रहे हैं यूजर से. सो वी हैव दिस फैसिलिटी ऑल्सो दैट सेल्फ डॉट नेम बोलूंगा तो ऑब्जेक्ट का नेम वेरिएबल यूज होगा, और सिर्फ नेम बोलूंगा सो वो एक एक्सटर्नल वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट के बाहर से मिल रहा है, कहीं से आ रहा है. Okay, I'll explain that part also when we create object and use. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे जो स्टूडेंट के नेम को प्रिंट कर सके. क्या कर सके, स्टूडेंट के नेम को प्रिंट कर सके. तो वन मोर फंक्शन तो तुमको क्रिएट करने आता ही है. हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, विल से डिस्प्ले. ओके, सो डिस्प्ले नेम फंक्शन. तो डिस्प्ले नेम फंक्शन को भी हमें सेल्फ देना ही पड़ेगा, यानी हर एक फंक्शन को तुम्हें क्या करना पड़ेगा पाइथन में. अगर क्लास यूज कर रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो उसमें सेल्फ वाला पैरामीटर तो डालना ही पड़ेगा. एंड व्हाट दिस डिस्प्ले फंक्शन विल डू, इट विल सिंपली प्रिंट दैट इट विल से माय नेम इज, and then we can print self dot name. Okay. तो यहाँ तक समझा ना कि क्लास कैसे बनेगा. ये जो ग्रीन बॉक्स हमने बना दिया. ओके, सो वी हैड क्रिएटेड दिस ग्रीन बॉक्स व्हिच नेम ऑफ दिस बॉक्स इज स्टूडेंट. ओके, सो हमने स्टूडेंट का क्या किया है, एक क्लास बनाया है. इस क्लास के अंदर एक ही वेरिएबल है जिसका नाम नेम है. हाँ, और उसके अंदर दो फंक्शंस हमने बनाए, दो फंक्शंस बनाए हैं. एक फंक्शन क्या है, वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसको जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको वैल्यू असाइन करेगा, और जो दूसरा फंक्शन है ये डिस्प्ले करेगा, नेम को डिस्प्ले करेगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करेंगे. नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जाके नाउ वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो ऑब्जेक्ट्स में जैसे मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, समझो कि द्युति के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है. ठीक है, तो एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया द्युति करके. तो ये क्या है, ये एक स्टूडेंट है. तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट का जो क्लास है ना उसे, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, द्युति करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. तो कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है ये, तो अभी हमने एक स्टूडेंट का क्लास बनाया, वैसे हम बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं ना. तो अभी मुझे कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मुझे स्टूडेंट के टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. ओके, और ये क्या हो गया, जब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो बेसिकली मैं ये इनिट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ. सो देयर इज दिस शॉर्टकट कनेक्शन बिटवीन इनिट एंड क्लास. ओके, तो जब भी मैं क्लास नेम लिखूंगा और ये ब्रैकेट्स लिखूंगा, इट मींस आई एम कॉलिंग अ फंक्शन. नो, ये क्या होता है, फंक्शन के लिए ब्रैकेट यूज होता है. तो हम लोग अभी कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हम लोग इनिट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. सो इनिट फंक्शन में हम कोई भी नेम दे सकते हैं यहाँ पे. सो आई विल गिव सम नेम ओवर हियर. ओके, से मिस. ओके, कुछ भी नेम दे सकते हैं. ओके, एनीथिंग. ओके, सो ऐसे कुछ भी नेम हम स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे. So this name is going to get stored in the variable name of object Duty. Okay, we can take this value input from user also, and then we can call print function. अगर मुझे चेक करना है कि ये बराबर से असाइन हो गया है क्या, then we'll call print function. To call other functions you have to call them with their name, बट init को हमारे पास एक शॉर्टकट वे है, हम क्लास के नेम के साथ में ही init फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं. तो प्रिंट फंक्शन को कोई पैरामीटर पास नहीं करना है. इफ आई रन दिस कोड, क्या प्रॉब्लम हो गया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट प्रिंट. ओके, हमारा फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले नेम, सॉरी.
ओके, सो हमारे फंक्शन का नाम है डिस्प्ले नेम। इसको सेव कर लेते हैं, रन किया तो सी ये प्रिंट फंक्शन रन हो गया यहाँ पे। सर इससे बचे तो सीधा प्रिंट यूज करके काम। तो इससे हमको बहुत सारे और भी बेनिफिट मिलते हैं ना, सिर्फ इतना ही करने नहीं मिल रहा है, इसके अलावा हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं ऑब्जेक्ट। वैसे हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी सैम्पल रैंडम हमने एक हर्ष करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ओके, उसका नाम हम रख सकते हैं, we can change and we can take this input from user also. Okay, and this is beginning. It's not like that we can only have one variable or one function. We can create multiple variable, multiple functions. Okay, एंड उनको ऐसे बॉक्स में पैकअप करेंगे कि वो सारे फंक्शंस है ना स्टूडेंट को ही रिलेटेड होने चाहिए, स्टूडेंट से रिलेटेड फंक्शंस को ही हमें एक क्लास में रखना है। ठीक है, if we don't Yes, sir. use class, then what will happen, we can have collection of functions, no, we can have functions which belongs to student, we can have functions which belongs to a bank account, we can have a function which belongs to teacher. But if we create class, then what we can do is we can segregate those functions together and put them proper in proper boxes, so that student function will belong to only student class, teachers function will belong to only teachers class. So that way there won't be any mix up between the functions. As you said, no, हम लोग तो ये बिना क्लासेस के भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या हो जाएगा कि सब फंक्शंस जो होंगे ना मिक्स होंगे एक दूसरे से। टीचर स्टूडेंट के फंक्शन को भी देख सकता है, जो स्टूडेंट होगा वो टीचर के फंक्शन को भी देख के यूज कर सकता है। सो इफ वी वांट टू डू प्रॉपर सेपरेशन एंड दोनों को एक अलग अलग ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना है, देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, सो अगर हम इसे रन करेंगे तो दो आउटपुट आएगा, एक में आएगा माय नेम इज द्युति और दूसरे में ये क्यों द्युति आ रहा है, दूसरे का नाम भी द्युति रखा है क्या हमने? अच्छा, हमने ये देखो, हमने ऑब्जेक्ट देखो सेल्फ का क्या यूज है, सेल्फ एफ आई यूज ऑब्जेक्ट नेम, नो, सो ऑब्जेक्ट नेम के हिसाब से वो प्रिंट फंक्शन को कॉल करेगा और स्पेसिफिक वेरिएबल को एक्सेस करेगा। सो द्युति ऑब्जेक्ट विल एक्सेस नेम ऑफ द्युति's ऑब्जेक्ट ओनली। ओके, अगर मुझे हर्ष के ऑब्जेक्ट का नेम एक्सेस करना है तो मैं हर्ष के ऑब्जेक्ट से ही कॉल कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तब जाके वो आउटपुट प्रॉपर आएगा। ओके Yes, sir.